Good evening. Welcome to this first session of CBSE guidance, online guidance or classes by us, which will be free of cost for complete year. Okay. Now, as recording has started, all of you are supposed to mark your attendance like name, standard, and location. Okay. So that will help us in identifying and connecting you properly. तो आप सब लोग अभी चैट बॉक्स में अपना नाम, स्टैंडर्ड और आपका लोकेशन लिखोगे। जैसे मैं लिखूंगा अपने लिए पनवेल नवी मुंबई, तो आप ऐसे जो आइडेंटिफाइबल लोकेशन है वो प्लीज लिखिए। लोकेशन भी लिखिए, इट विल हेल्प अस। आई वेट फॉर दैट। प्लीज पुट इन चैट बॉक्स। Okay, so let's get into today's session. Hopefully everybody will write it. The responses expected in every class which you will go through in next academic or coming academic year or a year, it is very important that you will respond properly, you will respond with the interest, then only probably learning process will go very nicely. This is being online class, it's very difficult for us to keep continuous watch on your actual activity during that particular 1 hour or 45 minutes online class, which will happen for 3 to 4 slots per week. So expecting that once it has been instructed, please give your attendance. We expect that you will give your attendance very fast. Now this is first slide you are going through. You must have seen lecture 1. I am talking about CBSE and this is opening class. So today there will not be any teaching. Today I will explain you philosophy and why we have exactly gone into such activity which is already available all over world. Okay, इंडिया में ही नहीं, सीबीएसई के स्कूल कॉलेज स्कूल्स आउट ऑफ इंडिया भी है और वहां भी बच्चे स्कूल जाते हैं, मम्मी डैडी बहुत ज्यादा फीस पे करते हैं और फिर बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं। तो ये 2-3 बार पढ़ने की जो प्रक्रिया है, पढ़ने की प्रक्रिया सही है, बट बार बार पैसे देने की तकलीफ माँ बाप को जो आप देते हो वो मुझे सही नहीं लगती है। मैं कुछ ये ओपिनियन रखता हूँ कि एटलीस्ट एजुकेशन सबको कंप्लीटली फ्री होना चाहिए टिल ग्रेजुएशन, और उसके लिए एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए, मेरिट। मतलब आप ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप बहुत होशियार हो बट मेडिकल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके जेब में पैसे नहीं है और मम्मी डैडी के अकाउंट में पैसे नहीं। तो ये होना हो पॉसिबल है कि नहीं, ये मुझे इतना तो आइडिया नहीं है, बट ये मैं कर सकता हूँ कि जो एक गाइडेंस जरूरी है अप टू 10th और 12th, जिसमें भी काफी कमर्शियल माइंडेड लोग आ गए हैं, वो तो फ्री में हो सकता है। ये ऑनलाइन तरीका जो अभी पैंडेमिक में शुरू हुआ उसमें हमें एक जरिया मिल गया, तो उससे वी कैन ट्राई दिस, वी आर ट्राइंग दिस सिंस लास्ट 2 years एंड दी सक्सेस or at least response rate is quite good. So let's get into the first. इस लेक्चर में या आगे आपको एकेडमिक्स में जो भी पढ़ाया जाएगा या जो भी नॉन एकेडमिक सिलेबस रिलेटेड भी लेक्चर्स होंगे, सब कुछ कहीं ना कहीं से कॉपी किया गया है। इंटरनेट ही माध्यम है बहुत जगह पे, तो जिनकी तरफ से ये इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाला गया उनका ऋण निर्देश, मतलब वी आर ट्राइंग टू एक्नॉलेज that we are indebted to them for their contribution in this particular class. Elvin cannot understand Hindi much. Okay. CBSE, most of the classes will run in Hindi and English. Okay. So there will be Hindi, there will be English. Hindi is national language, so Hindi आना ही है. Okay. Okay. English is important because it's the world language. मदर टंग इज कंपल्सरी क्योंकि उसमें हम बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, एंड यू कैन अंडरस्टैंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज गिवन ट्रेमेंडस ट्रस्ट ऑन मदर टंग, सो कीप योर प्रायोरिटीज विथ यू. Everybody has to understand Hindi in case you want to join our class. If you don't know, kindly accept our apologies. We cannot say further beyond this. Okay? We are Indian, we need to know Hindi. Now, anybody has got some special thoughts? We will discuss it later.
objective. So this will be boring lecture for students, but I'm expecting parents are sitting. So this is lecture for parents, students together, even for teachers also. Some teacher find that some of their students are very good and they need some guidance, which is possible by online means. So they are most welcome, because we are never going to charge fees from this student, and at least this is ensured for this academic year. तो आपको कभी भी ऐसे नहीं कि आपने किसी को पॉजिटिव माइंड से हमारे पास भेजा और बाद में हमने उनसे पैसे लेना चालू कर दिया, ऐसे नहीं होगा मोस्ट. ओके. सो intent of our online classes is to provide quality, time efficient academic guidance useful for long term futuristic benefit. अब ये आगे के academic guidance useful for long term futuristic benefit इसमें बाद में जाएंगे. क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस्ड मैच्योर टीचर अवेलेबल है जो पैसे के लिए नहीं पढ़ाते. उनको पढ़ाना है क्योंकि उनको लगता है कि मुझे जो आता है वो सबको समझ में आना चाहिए. There are a lot of people, one of at least 50-60% of our teacher will be of that type. वी हैव, मतलब यहाँ पे मैं एक नाम लेना चाहूंगा, तनुजा मैडम करके है, अराउंड 55 years, पीएचडी है, बट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को भी मैडम पढ़ाती है और 10th-12th के बच्चों को भी पढ़ाती है. विद ओनली इंटरेस्ट की शी लव टीचिंग वट एवर शी हैज लर्न इन हर लाइफ बाय एकेडमिक एक्सपीरियंस, बाय टीचिंग कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट, एंड ड्यूरिंग हर इंडस्ट्रियल एक्सपोजर जो उन्होंने 5-10 साल काम किया. सो शी इज वन ऑफ द टीम मेंबर. So you can understand quality is obviously very important. You can always complain about not good quality, because don't consider it is a free of cost, so you cannot complain. Free of cost doesn't mean that we do not have any other time pass, so we are doing it. Or for you, you don't think it free of cost है, कभी तो attend कर लिया, कभी नहीं कर लिया. It's not like that. We expect sincerity from you, and you should expect quality from us. There will not be much margin of adjustment in both of these. Indiscipline, insincerity, students will be removed without any intimation. Okay. But if you feel quality is not good, the teacher will be given particular guidance that why students are complaining like this. Now, this is applicable to the sincere, studious, discipline, and minimum expecting students and parents. Some people are always complaining. That will not be tolerated. Next, time efficient word I'm using only because you will be, see, most of you go to the tuition. I never went to tuition or coaching, but for you, when this is now a trend, so many of you go for the tuition. 1 hour, 2 hours tuition per day. You travel at least 15 to 20 minutes, 30 minutes. Some people travel even 1 hour, and return journey is equal time. So approximately 1 hour is spent. Associated travel time, energy loss, then lot of bad experiences, and so many other things are completely saved in an online mode. And that is what feedback from the parents during pandemic, after pandemic, when we are running, sorry, apologies, when we are running online classes for Maharashtra state government syllabus, nursery to 10th, when we are running German classes, Japanese classes, astronomy classes, English speaking classes, Marathi speaking classes, online teachers training program. So many programs we went through or we have conducted during last 2 years, and every time everybody said it's really wonderful because it saves lot of time. Only thing, lecture starts at exact time. 8 p.m. means 8 p.m. You have to be present before 8 p.m. means at least 7:58, 7:59 or so. So this is something expectation from your end. And if network problem is not there, if sudden emergency doesn't arise, then most of the time lectures run on time. So that is why I said this online mode of education is anyhow going to make all of us very time disciplined, and that is what expected in a student's age. आप जब 25 साल academics life में रहते हो, post graduation तक, PhD तक, expectation is sincerity and discipline also includes time discipline. So this is what is the intent of our online class, quality and time efficiency, which comes inbuilt. Now, useful for the long-term futuristic benefits that you will understand when you will go through the below points. What is it?
make students sincere, ethical, and disciplined. We don't tolerate time indiscipline. We don't tolerate like there is no response from the student for the homework. Then we remove that student. Okay. Similarly, suppose there is some discipline issue. Somebody is cross-trace messaging. Somebody is doing some unnecessary things in class. Then we don't allow those things. So it is expected that once you are part of the team which is disciplined and the receiving members, students are also disciplined. Then last 2 years experience of 100, 150 students, we had actually 500 students, reduced down to the 100, 150, and there was no discipline related matter in complete 2 years. And everybody appreciates that. Even I appreciate because I was not expecting such a wonderful response from the parents and students. See, I can expect anything, but fulfilling that comes from your end. So आपकी तरफ से ये fulfill हुआ, ये बहुत important है कि आप discipline को believe करते हो, विश्वास करते हो. Identify each student's real interest. As I said, the teachers are actually mature, capable, competent, efficient. So they keep judging the students. They keep telling or they keep responding us that that student is really good in this particular type of activity. This student is very sincere. This type of person is very responsive. So this type of things helps us when we conduct parent-student meeting to tell that this particular student has this deficiency, this particular student has these capabilities, and probably how we may be able to help you in regard to his futuristic career guidance. Please tell us. So parents really love such attitude because nowadays career guidance also is a costly affair. So identifying their interest, we guide them to make themselves so capable, efficient, and interest oriented that probably they become useful at every stage of life. क्या है मतलब, जैसे आजकल ये हो गया है कि सब काम मम्मी डैडी ने ही करना है, बच्चे ने सिर्फ पढ़ाई करना है या पढ़ाई का नाटक करना है, वो जो बहुत सारे नाटक ही करते हैं. तो ऐसे में बच्चा ना घर का कोई काम करता है, ना साफ सफाई का कोई घर में काम करता है. वी डोंट एक्सपेक्ट दैट. वी कीप telling students, teachers in my general purpose lectures. I take some at least monthly or 2 monthly one lecture related to so many other topics. I keep telling students to help parents, to family in regular day-to-day activity. It makes them really good and competent in household activity. All of us are required to be efficient in that. That is what my thinking. I don't know how many of you will agree, but many of the time people agree. Now once you are good at household activity, once you are good at school, once you are good at discipline, sincerity, then actually you are getting groomed for the better character. And character building is the only intention of education. That is what Swami Vivekananda ji said. So if it is character is built, then you don't just expect that you will get good salary, good job. Actually you will be such a useful human resource that you will be useful to the complete benefit of Mother Earth. मतलब वसुंधरा के कल्याण के लिए आप उपयोगी साबित हो सकते हो अगर आपका सही वक्त कैरेक्टर बिल्डिंग हो. तो चरित्र निर्माण एजुकेशन का उद्देश्य है, और जिसके चरित्र में बदलाव आया, निर्माण हुआ, स्वच्छ चरित्र वाला व्यक्ति सिर्फ एक दूसरे के नहीं, देश के नहीं, पूरे मानवता के काम आता है. ये जो महान लोगों ने कहा है, ये कहीं अचीव करने की हफ्ते में 4 बार 1 घंटा लेक्चर लेके ट्राई करेंगे. कितने सक्सेस होंगे या आप पे टोटली निर्भर करता है. इट्स टोटली अप टू यू. सपोज वी की एक्शन, तो आपको रिएक्शन देना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा. एंड इन दिस पर्टिकुलर ऑल अटेम्प्ट टू मेक इंडिया पावरफुल, हमें आपके लिए और आपको हमारे लिए कुछ करना होगा जो मनी ओरिएंटेड नहीं होगा. ओके, सो ये तो लास्ट टॉपिक है, उस पे बीइंग हैप्पी मैं एक टॉपिक लेक्चर ही ले लूंगा. So if you are very clear, the objective from our end is we are busy. Me, myself, and Vaishali madam, we both are very, very busy because you can go through internet. I do lot of activity apart from my official activity of working into the Bhabha Atomic Research Center since last 25 years. तो ये सारी एक्टिविटी के लिए मेरे पास 24 घंटे ही. आई स्टे अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर फ्रॉम द माई वर्किंग प्लेस. सो वो ट्रेवल टाइम भी है. इसके बावजूद भी मैं ये सारी चीजों में इन्वॉल्व रहता हूँ बिकॉज आई पर्सनली फील दैट अनलेस अंटिल यू गेट इन्वॉल्व यू विल नॉट लर्न. मैं खुद पूरे देश में जब 2600 लेक्चर दिए तो बहुत सीखा.
पिछले 2 साल में पैंडेमिक में, 1 साल में हमने जब 2-3 हजार लेक्चर ऑनलाइन पोस्ट किए, तो उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ. So I personally feel the intent from our end is to serve, and intent from our end is to make disciplined, sincere citizens for India, who will be useful for the humanity. Let's go further. Methodology what we follow is not something very high-fi. It's very plain. There will be PDF file of NCERT book. So NCERT PDF file, especially, will start with the maths and science. Every teacher will open that NCERT book. We will not follow any book from any school, because this invitation has gone all over India, north east to the Dwarka, Kashmir to the Car Nicobar. So everywhere this invitation that we are going to run free CBSE online guidance or academic classes has gone. So there are variety of students here also. You can see जब लोगों ने एड्रेस लिखा, so they have written many things. Like suppose somebody is from Chennai and they have little difficulty in understanding Hindi. We really appreciate and understand this problem. But thing is that the teachers will be from the neighborhood, mostly dwelling in the Maharashtra. So they know Marathi, Hindi, English to some extent, which probably they will not be using continuously. They will be reading out English book. NCERT book in English available on internet, or NCERT website will be opened in the class. Mathematics, whiteboard will be used, and the actual their solution will be obtained. So mathematics, we have team who can solve using whiteboard. Science also, team is efficient, but the science being bit theoretical, the lectures will be through the PDF file. So PDF book will be open, and similarly, I am presenting some text. PDF book text will be read and it will be explained. You will be allowed to ask questions through chat box. After your sincerity is being judged in first few lectures, you will be allowed to ask question by you opening up your mic. So that is the procedure we have followed. First 1-2 weeks, we don't allow everybody to open up mic. Okay, slowly we will open up depending on your responses in the chat box, and by that time we will have good number of students. We expect at least 15-20 students in each class, and will not allow students to go beyond certain limit. So if this is the story, academic guidance, simple teaching which is expected in any classroom in offline way will be done in an online way. Availability of lecture recording. Offline mode you will not have recording, so in online mode that is available. Every lecture will be recorded. Every lecture will be next 24 hours or 48 hours will be uploaded to YouTube, and you can go through that lecture any number of time. And it is essential because you will be going through the MCQ, multiple choice question examination or subjective examination, which are as per the guidelines of NCERT. Non-academic lectures will be conducted by me or some experts. Like I'm good in handling snakes. I'm good at astronomy. I'm good at career guidance. I'm good at public speaking, personality development. All those lectures will be taken. If now suppose next week you will have actual lectures, but by weekend or at least next to next week mid, we'll have some session on career guidance for you exclusive. So that is going to happen in a week or so, but we are expecting that additional students will join here for the CBSE class. Regular student parents meeting, so that we really need to understand what parents are playing role in the students academic learning which they are attending in the school and which they are attending by online mode. बहुत सारे बच्चे जो यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि जो सिंसियर है वही यहाँ पे है. Most of the students in initial days in online mode, we found that they are exploiting the situation. They will put up lecture on some system, another system will be used for doing some non-ethical, non-useful activity like talking to the friends, playing some games. We don't expect that to happen only because though you are not paying us, we are paying good amount to our teachers. So this particular project of CBSE Nursery to 10th class is going to cost me in lakhs. And this is my white money which comes from my office as my salary, and I'm using it for social work because I feel that at least something everybody has to do for some national development on societal or social ground. तो ये मेरे social project में आता है, but खर्चा होता है.
तो मेरी इज्जत हो ना हो, मेरे मेहनत से कमाए हुए पैसे की इज्जत के लिए आपको 1 घंटा जब लेक्चर हो रहा है, तो यू हैव टू 100% attentive because it is going to win. Then after Maharashtra State Board, why we went into the NCRT, we also run online UPSC classes. These classes are for the students who are not in position to pay few lakhs rupees fees at that offline location, maybe Pune, Hyderabad, Bangalore, Delhi, and accommodation which cost equally same. So इनको पढ़ाते वक्त I got to detail that NCRT is such a useful material for the UPSC and all other competitive examinations. So why not to teach this NCRT syllabus from our teachers, so that the teachers will be useful for the other guidance also, and students will also get benefited all over India. तो ये मद्देनजर रखते हुए with in view point of all these things, we have gone for this, and we are expecting that some of you will be in future at least trying for UPSC or similar useful competitive examination. That can start at a very early age, and it is essential sometimes. But let's see, those who are trying for IITG, or some people those who are trying to do NEET, or some people those who are trying to do some CDS, we will try and give guidance to everybody. But let's go ahead with this particular syllabus for at least month or so. Once we cross 30th June, that is getting your experience of 1.5 month, we will decide upon all other requirements or possible help to you or your expectations which are essential. So our end expectation in regular student parents meeting, these all points are addressed. We will go in bit detail after this particular point. Discipline, sincerity, best rules to keep admission intact and continue classes. This is must. If any report which is not right or not going ethically correct is obtained from the teachers कि ये बच्चा, ये स्टूडेंट, ये पेरेंट्स इस तरीके से इंटरफेरेंस किया, तो आपका एडमिशन कैंसिल होगा. ये यही है, गुरु शिष्य वाली परंपरा है. So you have to obey teachers because the teachers are not here by some uh, non-ethical way. They are here because I respect them, they respect me, and in both way we feel that they are really capable material to teach or groom somebody for the better citizen. तो ये सारी चीजें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, उसके कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए जो चाहिए, ऐसे लायक टीचर के साथ कोई भी किसी भी तरीके की बदतमीजी करे, ये टॉलरेट नहीं किया जाए. कंटेंट ऑफ डिस्कशन फोरम्स, जो नॉर्मली पेरेंट्स मीटिंग और स्टूडेंट्स डिस्कशन फोरम हम करते हैं apart from the academics, or something which is little different, like presently there are some hobby classes which are going on because this is our being holidays, so we keep doing so many things. All these discussions are actually pointed towards defining the priority wise liking of each student. जैसे मैंने बोला ना, we try to identify interest of each student. तो वो each student का interest identify करने के लिए apart from academics some other points also we address. Checking your inclination, your means students inclination or interest in reference to the various fields of education. Now new education policy I will talk about at the end of this particular slide के लास्ट में वो लिखा हुआ है, तभी हम बोलेंगे कि सरकार क्या चाहती है और मैं क्या चाहता हूं, और हम जो पहले से चाह रहे थे. Almost government is trying to come upon the same lines by new education policy. So combined thought on the future planning and convergence on the field of interest. Combined thought में एक element है students, दूसरा एलिमेंट है हमारे टीचर्स, तीसरा एलिमेंट है पेरेंट्स. दो दिस थ्री members need to converge on field of interest of the student. Now don't expect the third standard student has taken admission in this particular class और 1 साल 6 महीने के बाद आप सीधा चालू हो जाएंगे, सर उसको ना फिजिक्स बहुत पसंद है, सर उसको ना ही इज रियली वांट टू बिकम एस्ट्रोनॉट. तो थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे को नहीं पता होता है, या हमको पता है, ये आपको पता करना पड़ेगा कि हम बोल रहे हैं, हमको जो समझ में आता है वो सही है. सो आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, सबके हिसाब से चलेंगे, जो स्टैंडर्ड है सही है. मुझे कभी किसी ने करियर गाइडेंस नहीं दिया, और अगर गलती से यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स हैं, सो यू नो, जितने हम बेवजह स्पेसिफिक होने लगे हैं उतनी जरूरत नहीं होती. एट सम स्टेज वी नीड टू बी ओनली डिसिप्लिन एंड सिंसियर. और ये डिसिप्लिन, सिंसियरिटी और इंटरेस्ट पढ़ाई में आने के लिए माँ बाप का रोल बहुत जरूरी है. वो रोल आपको बार बार बताया जाएगा,
आपको उसमें सम्मिलित, यू नीड टू कंट्रीब्यूट लॉट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। नेक्स्ट है पेरेंट्स टीचर्स रोल, आइडेंटिफाइंग इंटरेस्ट, बोलेंगे इसके ऊपर। कैंडिडेट्स रोल इन शेपिंग, सबसे जिम्मेदार कैंडिडेट यहाँ स्टूडेंट्स हैं, तो उनके रोल के बारे में हम कंटिन्यूसली डिस्कशन फोरम में बोलते हैं। एंड आई सेड कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज बीइंग हैप्पी, बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज रीजन फॉर बीइंग। ये इकिगाई करके एक जापानीज टेक्निक है, मिसनॉर्मल मतलब है कि भाई लोगों ने जैसे इंटरप्रेट किया वैसा नहीं है। बट इस चीज को जब मैं पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को इसके ऊपर एक लेक्चर देना जरूरी है। सो लास्ट ईयर वी एड्रेस लिटिल बिट, this year also we'll try to address this particular topic, which will be really useful for the students, parents, for being happy and professionally successful and academically also successful. So this is new education policy. Why I'm telling you this new education policy? The groups are made where the brain takes the signal or information or receives the data, interprets it and molds it. जिस तरीके से मस्तिष्क का विकास होता है, इस तरीके से इन सालों का क्लासिफिकेशन। What these years are: nursery to junior, senior, first and second. It's 5 years. Government expect everybody should learn in a mother tongue, because at least language is not barrier. Whatever they keep listening around them, that is what they are going to listen in school. So interpreting data, putting it into the brain and making things start learning things in a logical way is the best possibility with a mother tongue. So that is what government is coming up to. I'm also damn happy, though I respect Hindi and English very well, but then learning things in a mother tongue is always the best thing. We have gone through the same phases, not through the very good school and never through the coaching classes, but we have done quite good in our life for self and society, family, everybody. So next group comes is basically third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, 9, 10th, 11, 12th. These are the basically orientation towards the interest and application science or application professional guidance to become skillful, so that आप अपनी जिंदगी की रोजी रोटी कमा सको या फिर फ्यूचरिस्टिक आप उसमें कुछ रिसर्च कंट्रीब्यूशन कर पाओ। In our lectures, initially nursery, junior, senior will be clubbed. If we don't get number of students, they will be clubbed forever throughout complete class. Okay. Now come to the first and second. Probably they will also be clubbed. Probably this time till end of May, nursery, junior, senior, first will be clubbed. Then second, third, fourth, fifth will be clubbed. This is for the 2 weeks. जब तक बच्चे बढ़ते ही नहीं तब तक क्या पढ़ाया जाएगा? वही पढ़ाया जाएगा जैसे 3 क्लासेस है तो एक 15-15 मिनट पढ़ाया जाएगा, पर सबको सुनना है। एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन फेज। मतलब आपने जो नर्सरी वाले छोटे बच्चों को तो छोड़ ही दीजिए, सोचिए कि हम बात कर रहे हैं थर्ड फोर्थ की। ओके, तो थर्ड में जो पढ़ा उसमें से ही 25-30% फोर्थ में होता है। इन कोरोना पीरियड आगे जाके मैं कवर करूंगा। सरकार मतलब गवर्नमेंट वाज वेरी एडमेंट कि देयर हैज टू बी प्रीवियस टीचिंग बिफोर स्टूडेंट गो टू द नेक्स्ट क्लास। तो हम भी इसको थोड़ा फॉलो करते हैं। और डोंट बॉदर, इन वट एवर अलॉटेड टाइम यूर ऑल syllabus will be nicely covered. Everybody will get sufficient number of tests and they will get good preparation in just participating 45 minutes to 1 hour, 4 days a week. We are presently talking about science and mathematics. Specifically, as far as the intellectual capacity development or understanding this subject is always difficult. Really speaking, language, or when you talk about history, civics, geography is bit like a science, but history, civics and languages is something related to utmost sincerity. आप 10 बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा, समझ में ही नहीं आती है language, that is something runaway that you have to understand from your kids at early age. कि ये इस तरीके का रनअवे सिंसियरिटी की ही बात है, इनसिंसियरिटी की बात है। तो मैथ साइंस पे हम शुरुआत करेंगे। इफ योर रिस्पॉन्स इज गुड वी विल गो इनटू द अदर सब्जेक्ट्स आल्सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पेरेंट्स मीटिंग। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसके बारे में मैंने थोड़ा बताया। अभी अगर आपके कुछ क्वेश्चन चैट बॉक्स में आए हैं, आई विल गो थ्रू द चैट बॉक्स। जस्ट गिव मी सेकंड, आई विल वेट फॉर योर क्वेश्चंस। बिफोर दैट बहुत सारे मैसेज है तो वो एड्रेस और नाम के है तो मैं देख लेता हूँ। Just give me a second. Chennai, Bhubaneswar, then Indore, then Gurgaon.
मिस्टर श्लोक कदम, सुसगांव कहाँ है? ये तो चेन्नई वाले को और मुंबई वाले को फटाक से समझ में नहीं आएगा ना। आप ठीक से लिखना तो सीखो, जो लिखोगे वो इंडियंस को सारे समझ में आना चाहिए। नौहर, नौहर वाले को भी लिखना पड़ेगा कि आप हनुमानगढ़ के हो, राजस्थान। असम, ओके। बाकी लोग और रत्नागिरी, न्यू दिल्ली, पनवेल, सोलापुर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, पूरा भारत है। दैट्स सो नाइस। आई समटाइम फील वेरी हैप्पी अबाउट आवर ओन प्रोजेक्ट्स। लुधियाना, भुवनेश्वर, पंजाब, ओके ओके ग्रेट। काटी गोवा काचे, ओके काटे, Mumbai. Give me some time. I'll go through Delhi. Then Assam, Badarpur. Very good. Then I'm really sorry. Even it's Punjab, Lahore. Okay, great. श्लोक कदम, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? हिंदी इस बोल देता हूँ। महाराष्ट्र में हो, ठीक हो? महाराष्ट्र में कौन सी जगह से हो? कोई तालुका, ब्लॉक होगा, कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, है ना? 50 क्लासेस अटेंड करने के बाद फिर एड्रेस में हम अपनी जगह लिखते हैं, फिर तहसील लिखते हैं, मतलब ब्लॉक बोलते हैं जिसको, फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, फिर हमारी स्टेट लिखते हैं, फिर कंट्री लिखते हैं ना। तो उतना आपको आना चाहिए समझ में। सो आई हैव गॉन थ्रू नाउ। आपके सवाल तो मिले ही नहीं कुछ, मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, आई होप। No questions. So, let's get into the further part of it. See, this idea of online education stuck to me, of course, was the necessity. Okay, when during 2020 May or April end, because it was lockdown and everybody wanted some help. So we thought, why not to get into this? Google Meet and Zoom and all this have started. So we took help. We both of us started and we took help from our UPSC hostel students, and combined efforts that after 2-3 months we could establish around 400 students. And this 200 400 students, because of the discipline we removed, but 150 were continuing for last 2 years. And then the major benefit to us was that we are running with time. We know the technology. We know many things which many of the people still don't know of our age, only because they don't get into such interesting projects. So ये project में जाने के बाद बीच में somebody wanted me to help them understand after Corona what will be the education status. And the only thing in next 2-3 slides I'm going to touch upon, and in another 10-15 minutes I'm going to close this class. So just be patient. What I'm trying to going to tell you that Corona period has made many things online. Even offices has gone on. It is saving on lot many things. For me, मैं सिर्फ इतना ही समझ पा रहा हूँ कि बच्चों के लिए फिजिकली अगर कहीं एंगेज होना है जिससे खेलने का मजा आए, जैसे आप सपोज बैडमिंटन खेल रहे हो, आप कबड्डी खेल रहे हो, पकड़ा पकड़ी खेल रहे हो, कुछ भी, whatever you are playing, then that demands time. If you are busy in school, if you are busy in tuition, then you are busy in something, then something, and then something, which is only related to the brain and no physical movement in all round direction, then probably you will have a lot of other issues at later date, that probably you are not connected to the physical activity. So if after school you plan that everything which I study or learn related to the brain, which is academics first, is by online mode, where I'm spending suppose 10 minutes or 1 hour or 2 hours, it is fullest to the that particular utilization. ऐसे नहीं कि 1 घंटा पढ़ने के लिए 2 घंटा ट्रैवल हो रहा है, तो ये न हो, इसलिए ऑनलाइन तरीका बहुत जरूरी है। ये अपॉर्चुनिटी हमें कोरोना पीरियड ने दी, मतलब अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं। मालूम है उस पीरियड में बहुत लोगों ने बहुत तकलीफें सही, बट देन बिकॉज ऑफ द कोरोना पीरियड एंड नॉट, मतलब बहुत सारे बच्चों को तो स्कूलिंग मिला ही नहीं, सब ऑनलाइन तरीके से नहीं सीख सकते ना। तो उस दरमियान मेनी पीपल हैड डायरेक्ट गैप इन टीचिंग, बहुत सारे लोगों के फंडामेंटल्स वीक हो गए, बच्चों में इनडिसिप्लिन आ गया, क्योंकि घर पे रहते हैं तो कभी भी उठते हैं, कुछ भी करते हैं, टाइम शेड्यूल सबके डिस्टर्ब हो गए, लेजी हो गए, बच्चे इनसिंसियर हो गए, पेरेंट्स के साथ ज्यादा रहने से पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन गैप आ गया, और टीचर से दूर रहने के कारण टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन गैप आ गया, और एडिक्शन हो गया मोबाइल टीवी ये सब चीज से।
और ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से तो एक जरिया मिल गया कि भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ जबकि काम कुछ और चल रहा है। तो ये सारे चैलेंजेस के ऊपर भी मेरे जैसा व्यक्ति ऑनलाइन को बहुत सपोर्ट करता है। देर आर मेनी थिंग्स, बट कोई भी चीज आपको सही ढंग से फायदा देने वाली देना चाहती है या आप उससे फायदा लेना चाहते हैं, देन प्रोबेबली यू हैव टू हैव सम ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज व्हाट यंग किड्स, जो छोटे बच्चे ऑनलाइन में बैठते नहीं है ऐसा आपको लगता है, उनको आप साथ में लेके बैठ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड के भी बच्चे, तो दिस इज नॉट दी फ्रॉम किड्स, इट इज फ्रॉम द पेरेंट्स। तो ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों के मामले में बहुत जागरूक है, they are very awakened citizens, they are actually helping not nation but helping mother earth for the future sustainable development। तो आपके लिए ये इस तरीके के हमारे एफर्ट्स चलते ही रहेंगे। जो माँ बाप बहुत ही सतर्क है और अपने बच्चों के लिए इस तरीके से हमेशा ही कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए ही ये क्लास है। अभी माँ बाप का दूसरा रोल भी है कि ऑनलाइन टीचिंग में आपको जितना समझ में आया वो क्लास उतना बच्चे को समझ में नहीं आया। सो इट्स बेटर यू गाइड एंड असिस्ट योर किड्स ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी, हेल्प देम टू बिल्ड गुड लैंग्वेजेस। ये बेसिकली जब भी बच्चे फ्री है, आप पिकनिक पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, ये सब जगह पुराने जमाने में होता था कि ट्रेन की भी जर्नी हो रही है तो माँ बाप बच्चे के हाथ में डायरी पकड़ा देते थे और बोलते थे नाउ नोट डाउन एवरी स्टेशन वेयर आवर ट्रेन विल स्टॉप, इवन इट डजंट स्टॉप यू कैन ऑलवेज पॉइंट इट आउट कि यहाँ से गुजरी बट रुकी नहीं। तो इस तरीके की एकेडमिक्स रिलेटेड एक्टिविटी अबाउट लैंग्वेजेस, राइटिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग द स्किल, mathematical ability, learning the tables, these things can be done। assist them in preparing and memorizing charts, maths, ये सब मैं बोल दिया। एक ही चीज में बच्चों की डायरेक्ट मदद नहीं करनी है, होमवर्क। और सारे माँ बाप यही गलती करते हैं, बच्चों को खुश करने के लिए उनका होमवर्क कर दे। होमवर्क बच्चों का जो स्कूल में पढ़ा, ट्यूशन में पढ़ा, वो कितना समझ में आया और कितना सिंसियरली वो एक्स्ट्रा वर्क कर पाता है, इसको असेस करने का एक जरिया है। why you are interfering that particular activity, you can always help them in case they are not able to solve certain steps or stages, but completely करने की जरूरत नहीं। ये आपका प्यार नहीं है, आपको बच्चों को आप एक्चुअली बिगाड़ रहे हैं, तो ये न करे तो बेहतर होगा। अपॉर्चुनिटीज क्या दी बताने की जरूरत नहीं है। पहली अपॉर्चुनिटी ये है, इंटरनेट पे इतना ज्यादा मटेरियल एकेडमिक्स के बारे में, प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में, हर इंजीनियरिंग एबिलिटी के बारे में आया है। नन ऑफ यू आर एक्चुअली नाउ हियर आफ्टर ना स्कूल जाने की जरूरत है, ना कॉलेज जाने की जरूरत है, ना ट्यूशन जाने की जरूरत है, ना हमारा ऑनलाइन क्लास करने की जरूरत है, सब कुछ इंटरनेट पे। व्हाट इज प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज that probably everything is available and in this complete mess you will not do anything, so there has to be some schedule। schools, colleges 15 साल की ग्रेजुएशन तक का ऑफलाइन एजुकेशन इसेंशियल इसलिए है क्योंकि में सिर्फ हम लोग एकेडमिक्स पढ़ने नहीं जाते, हम डिसिप्लिन, संस्कार, है ना, टीम वर्क और इक्वालिटी, इक्विटी, सारे जो भारतीय संविधान के मूल आधार है वो भी समझने जाते हैं। तो ये सारे आधार भी जरूरी है। तो भाई आपको ऑनलाइन पे सब कुछ अवेलेबल है, जितना हो सके आप मम्मी डैडी का पैसा और खुद का समय बचाइए, ऊर्जा बचाइए, यूज इट फॉर सम प्लेइंग और सम अदर हॉबीज और सम स्पेशल इंटरेस्ट विच यू हैव। बहुत सारे बच्चों को आजकल स्पेशल इंटरेस्ट तो होते ही है, कोई सिंगिंग में है, कोई टीचिंग में है, कोई कुकिंग में है, वॉट कोई राइटिंग स्किल अक्वायर करता है। तो ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट पे मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है आपके हर इंटरेस्ट के लिए और एकेडमिक्स के लिए। ये अपॉर्चुनिटी संधि हमको कोरोना के बाद जो मेजर टेक्नोलॉजिकल बाढ़ आई उसमें मिली। एनईपी एंड रिलेवेंस इन रेफरेंस टू पैरा 1, आपको जो भी कुछ पढ़ना है इंटरनेट पे है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस पे बहुत है कि भाई आपको जो चाहिए वो बेसिक ले लीजिए, बट बाकी जो आपके इंटरेस्ट के फील्ड है वो भी ले सकते हैं। मतलब आर्ट्स वाला मैथ्स ले सकता है, ओके, साइंस वाला कुछ कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट चूज कर सकता है। द इम्प्लीमेंटेशन में भी लिटिल एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब टाइम लगेगा, बट ये सारी चीजें, ये प्रावधान उपलब्ध होने वाले हैं। व्हाट इज पेंडिंग? पेंडिंग इज
जैसे some time before somebody expected कि I should speak completely in English. For me it is not difficult but not easy also. So suppose if somebody expects कि there has to be every content in English, internet it's available. But somebody expects that there has to be every content in Malayalam or Bangla or Marathi or Udiya or Punjabi. It's not available, or at least Kashmiri, or at least some language from Northeast. Then it's not available. So that content has to be pumped in on internet, and you will be paid handsomely. And that is something professional life you are going to enjoy. So identify your interest, because internet will be hungry. This ocean of knowledge will be hungry to have some additional dumping to fulfill the requirement of the masses, which are looking as a major resource to the internet. तो इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में बहुत कुछ आया है, बहुत बहुत कुछ आना बाकी है. हिंदुस्तान में ही कितनी लैंग्वेजेस है. So that is where lot of activities are pending. If you get into the online education, you will be able to contribute to the online education in the future, and obviously it will be your bread and butter. मटेरियल अवेलेबिलिटी सिर्फ इस चीजों के बारे में नहीं है, स्पोर्ट्स के बारे में. आप फ्रंट फुट पे कैसे खेलना चाहते हो, क्रिकेट मतलब सीजन क्रिकेट, या फिर आप किक ट्राई करना चाहते हो, या पेनल्टी कॉर्नर पे कौन से टेक्निक यूज कर, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. सो वो आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं. कंक्लूजन यही है कि नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. आपके एकेडमिक स्किल, इंटरेस्ट, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है. विजिलेंट रहना है. बच्चे छोटे हैं, चौथी पांचवी के बच्चों को भी आजकल वो समझ में आने लगा है जो हमको 14-15वें साल में समझ में नहीं आता. दिस इज कॉल्ड जनरेशन गैप, और एटलीस्ट द स्पीड विच द यंगर जनरेशन इज गोइंग. तो ये सब लोग जो आगे जा रहे हैं, इनको एक ही चीज की कमी नहीं महसूस होनी चाहिए, और वो है संस्कार एंड एक कांस्टेंट सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द फैमिली. ये दोनों चीजें अच्छे से है, बच्चों पे आप कॉन्फिडेंस दिखाओगे, तो ऑब्वियसली this online methodology will help them a lot, and it will save your time, money, and your money and their time and energy. इंटरनेट में भी कुछ यही कंक्लूजन है, उसको मैं पढ़ूंगा नहीं. न्यू एजुकेशन सिस्टम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इंटरनेट पे बहुत अच्छे से होता है. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इंटरनेट पे काफी मात्रा में प्रोजेक्ट विद डायरेक्ट हाउ टू डू और DIY कुछ होता है ना, वैसे टाइप के डू इट यूर सेल्फ वाले कितने किड्स, और कितनी. अगर डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी के वीडियो आप देखोगे, तो आपको कभी भी जिंदगी में फ्री वक्त नहीं रहेगा. ऐसे कई लोग हैं जो कई चीजें इंटरनेट पे डालते हैं. तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी आजकल इंटरनेट पे हो सकता है. मेंटरिंग ऑनलाइन तरीके से, सपोज मैं भाषण दूं या कोई भी भाषण दे, उसका उतना इफेक्ट नहीं जितना फिजिकल प्रेजेंस से होगा. बट okay, mentoring, if you want, I will try to call you here, but throughout India calling here will be difficult, so I will try to come to your places. What I need is find students whom I can address on 2-3 topics, can make you see some good celestial beauties. सेटन के रिंग देख सकते हैं, जुपिटर के मून्स देख सकते हैं. तो बहुत सारी चीजें हम में कॉमन है जो हम कर सकते हैं. ये फीस पैटर्न है जो आपको नहीं देना है, तो रखूंगा नहीं, सिर्फ आपकी जानकारी के. तो अभी इस तरीके से आपका सिलेबस चालू हो जाएगा. चलो 8 साइंस का कोई टॉपिक लेना है तो ज्यादा नहीं, यहाँ हम लोग 8 की सिर्फ इंडेक्स ही खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. साइंस में पहले कुछ बायोलॉजी, बॉटनी रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, देन यू हैव सम केमिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स विच हैव इंक्लूसिव सम फिजिक्स लाइक मटेरियल्स. मेटलर्जी में आते हैं बट वो फिजिक्स का भी हिस्सा है. फिर आप देखेंगे फोर्स, फिजिक्स, फ्रिक्शन, साउंड. साउंड तो हर स्टैंडर्ड में ऑलमोस्ट पढ़ाया जाता है, साउंड एंड लाइट. तो इस तरीके से देखिए, लाइट बोला, लाइट 16 नंबर पे है. वेरी लेस सिलेबस रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, CBSE. So we have already 50 hours of astronomy. Okay, that is good enough for beginners. तो उसके प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर किए जाएंगे, वो भी आप देख सकते हो. जर्मन, जापानीज और मराठी और इंग्लिश स्पीकिंग के 4 भाषाओं के ऑलमोस्ट एक 30-50 लेक्चर्स अवेलेबल है हमारी तरफ से, जिसके लिए हमने लोगों से पैसे लिए थे, और वो क्लासेस अभी खत्म हो चुकी है. कुछ क्लासेस कंटिन्यूड है, और उसमें आपको भी ऐड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ये सारी चीजें हमारे पास से आपको दी जाएंगी. कुछ चीजें ऑलरेडी इंटरनेट पे है, तो अभी ऑलरेडी मैंने आपके 43.5 मिनट्स ले ली. सो आई वुड लाइक टू गो अगेन इनटू द
इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो। नहीं तो नहीं है सवाल तो आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है और आप क्या करेंगे। आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे, खुद का इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते रहेंगे। हमारे गाइडेंस से अगर हमने डिफाइन कर लिया कि एक्स बच्चे को राइटिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है, स्टोरी पढ़ना लिखना पसंद है, आर्टिकल्स लिखना पढ़ना पसंद है, तो भाई बैठ के कभी इंडिविजुअलिस्टिक वन टू वन विल हैव डिस्कशन एंड विल डिफाइन what education he can pursue, what all other options he can have. Sometime he start feeling कि नहीं मुझे इससे ज्यादा इंटरेस्ट तो इसमें आ रहा है, जर्नलिज्म में आ रहा है। सो वी विल ट्राई टू एड्रेस कि ऐसा कौन से उम्र में कब तक कैसे होता है and how we should take these things positively. Change of interest is a very obvious if you are human being and we all are human beings. So change of interest से बच्चों को डांटने की भी जरूरत नहीं है। हम सब उस मतलब दौर से गुजरे हैं जिनका कोई कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं सिंसियर था, सिस्टमैटिक था, so I reached to some destination where people appreciate me lot and I'm still continuing with that sincerity and that particular honesty. तो बच्चों में ऑनेस्टी सिंसियरिटी लाने की हम ऑनलाइन तरीके से कोशिश करेंगे। सक्सेस आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड है। देन ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एवर यू आर रीडिंग और लिसनिंग, ये बच्चों को करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ट्राई ट्राई ट्राई, डोंट क्राई, करते रहना है। आज का होमवर्क है, प्रिपेयर योर स्टडी टाइम, ब्रीफ नोट बना लीजिए अपने इंटरेस्ट पे। 12वीं के बाद क्या टारगेट्स आप डिफाइन करना चाहते हो, इसके ऊपर कुछ सोचा है मम्मी डैडी बच्चों ने, तो वो भी आप बना सकते हैं। कभी मैं पूछूंगा तो इसके ऊपर आप सीधा मुझे भाषण दे सकते हैं, तो मैं आपसे उस टॉपिक पे बात कर सकूं। रिवाइज सिलेबस कवर्ड टुडे, नो सिलेबस कवर्ड। सो अभी इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूसडे। ट्यूसडे से जैसे मैंने बोला वैसे ग्रुप्स में या इंडिविजुअली क्लासेस शुरू हो जाएंगे। टाइमिंग रहेंगे शाम के 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ये स्लॉट्स है। कभी इनका मतलब थर्ड फोर्थ का उधर होगा, कभी फिफ्थ सिक्स का होगा, या कभी एट का होगा, या कभी नाइन्थ का होगा, डिपेंड्स। जिस बैच में सफिशिएंट बच्चा आ गए उनका सिस्टमेटिकली पढ़ा हो जाएगा। 10th का सिलेबस वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट इन द मिड ऑफ जून, जब सफिशिएंट मतलब अभी 5-6 बच्चों ने एडमिशन लिया है, सो वी एक्सपेक्ट एटलीस्ट 20 स्टूडेंट, दैट टू सिंसियर। बाकी के लिए 10-12 बच्चे होने चाहिए, बट देन वी आर स्टार्ट। ट्यूसडे वी विल हैव सेपरेट क्लासेस। जो ग्रुप्स होंगे वो मैडम आपको बता देंगी। एवरीथिंग विल बी पोस्टेड टू द व्हाट्सएप ग्रुप की नॉनसेंसिकल बिहेव करेंगे उनको रिमूव कर। तो ट्यूसडे इज योर स्टार्ट ऑफ एकेडमिक्स। थोड़ा धीरे धीरे स्लो चलेगा, बहुत सारे क्लासेस कंबाइंड चलेंगे जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटी, ग्रामर टाइप के टॉपिक्स एड्रेस किए जाएंगे, विथ नोट ऑन एपोलॉजी कि भाई एडवांस एपोलॉजी के साथ लेक्चर्स विल बी इन दी इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स। देयर विल नॉट बी प्योर इंग्लिश यूसेज, देयर विल नॉट बी प्योर हिंदी यूसेज। ये दो लैंग्वेज में ही लेक्चर चलेंगे। किताबें एनसीईआरटी के वेबसाइट से डाउनलोड की गई पढ़ाए जाएंगे। आपके स्कूल की आपकी अपनी किताब आप अपने तरीके से रेफर करिए। इफ यू हैव डाउट्स यू कैन कीप पोस्टिंग। जितना हो सके टीचर्स को एड्रेस करना की कोशिश करेंगे, बट इट विल नॉट बी कंपल्सरी। मतलब ऐसे नहीं कि हर लेक्चर के बाद टीचर के पास 100 सवाल पहुंच गए तो 100 सवाल का जवाब टीचर नहीं दे पाएंगे। बट आपका एकेडमिक्स का जो फंडामेंटल है, पढ़ने की जो मेथोडोलॉजी है, और आपका कोई भी डाउट अनछुआ नहीं रहेगा, दैट वी विल कीप ट्राइंग। सो थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। दिस इज वेट, this is something for you. Now I'll go through once again message. There will be something for me. Online classes, save time, okay, money, energy. There are multiple experts available. Yes, great, good. Ishwari ji, good. Murmai Agnivati, commendable efforts. You are really pointing out right. Wala atyanta pointing ke tira samjh rahe ho. See, I am telling you. When we started teaching, ये मैं जवाब दे रहा हूँ मृण्मयी अग्निहोत्री। See, when we started taking up German classes, Japanese classes, Marathi and English classes, I started going through the internet because first lecture will be by me only, and it will be on why we should learn languages, how important.
And that time, though I know Sanskrit, I know Hindi, I know Marathi, I know English, go around complete country multiple times. Okay, 2600 लेक्चर दिए तो मतलब 2600 लोकेशन को टच करके आया हूँ. So I know other languages, some words I know. But that time when I went through the internet, I learned that learning language is the major thing which builds your mind और मस्तिष्क के विकास के लिए it's one of the most useful thing. And if you are paying attention for to the your kids कि वो संस्कृत सीखे, nothing wrong. They should learn Sanskrit, they should learn Marathi, they should learn Hindi. In case you have neighbors who know Telugu or Kannada, let them learn. Kids are very good in separating the things because उनका मस्तिष्क जो है वो अभी विकास होना है. हमारा रिजिड हो गया. 25 के बाद की डेवलपमेंट और 25 के पहले की डेवलपमेंट और 5 साल तक की डेवलपमेंट, इसमें एक्सपोनेंशियल फर्क है. तो आप इस चीजों को समझिए. नोबडी शुड फील सॉरी. एंड इफ यू अप्रिशिएट आवर एफर्ट, देन लेट मी टेल यू, दिस इज द ओनली फ्यूल विच कीप चार्जिंग अस. हम चाहते हैं कि जब मुझे कुछ आता है, मैडम को कुछ आता है, हमारे पास अच्छी टीम है जो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करती है, तो सब लोग मिलके मेरे जेब से सपोज एक 2-4 लाख चले जाते हैं. हाउ डज इट मैटर? मनी इज फॉर द गुड कॉज ओनली. सो दिस your appreciation that I am doing something good is not only charging me, but I have some expectation. Keep adding some good student. Tell me your expectation, and in online mode, helping you out is actually much time and money efficient. क्योंकि इसमें वक्त जाता नहीं. मैं आप कभी भी फोन करेंगे तो आपको डांटूंगा और बोलूंगा प्लीज मुझे मैसेज करिए आपके क्वेश्चन. मैसेज किए हुए क्वेश्चंस को मैं पढ़ूंगा, उसका जवाब सोचूंगा, एंड देन व्हेन नेक्स्ट टाइम आई टॉक टू यू, जो डिस्कशन आपका 2 घंटे होना था वो 10 मिनट में, 15 मिनट में हो जाता है. मैं थोड़ा इस तरीके से अपने ऑफिशियल मीटिंग्स में भी चलता हूँ. विदाउट होमवर्क मैं कहीं नहीं जाता. आप भी ना आए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है. ओके, सो मृणमयी जी, आई एम रियली आई रियली फील हैप्पी कि आप अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश करें, पर उसमें आप खुद भी पार्टिसिपेट करते रहिए. ओके सर, आई एम इन 9th, so I have to learn of class 8 probably. What is this interpretation? If you are in 9th, you will be taught 9th only. Okay, 8th you will be taught 8th only. I am talking about younger classes. Second, third में कुछ ज्यादा नहीं होता है. नर्सरी, जूनियर, सीनियर में कुछ ज्यादा नहीं होता है. सब वही पढ़ते रहते हैं. साल जो चीज उनको एक्चुअली महीने में पढ़ानी है उसको साल भर पढ़ाते हैं. स्कूल को फीस लेनी है, गवर्नमेंट को उनको दिखाना है कि साल भर बच्चा स्कूल आया. तो देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द 8, 9, 10, they are special, they're exclusive now. Some people start studying for IIT JEE from the 8th, 7th standard. Nothing wrong in that. It's good. If you are preparing in the advance, what is wrong? So I don't. Only thing, taking pressure from the parents or taking pressure from the society is not acceptable. If you like preparing for the IIT and you want to study from the 5th standard कि सर मुझे complicated mathematical सवालों का solve करना अच्छा लगता है, so nothing wrong. But it will come through the फैमिली बैकग्राउंड. मतलब घर पे सब पढ़ते तो बच्चा भी पढ़ेगा, सब टीवी देखते तो बच्चा भी टीवी देखेगा. सो जयश्री, सोनी जी, डोंट फील, you will be taught properly. Only thing we will be expecting very sincere, dedicated efforts from your end. Don't, sir, session is on different time or in same time. Now this question is not me, but Ishwari. I'm in 10th now. I have free time, hence please start as soon as possible. Don't bother. If you have free time, we will be taking 4 days. चलो मान लो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इनिशियली तो. ओके, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में 2 दिन साइंस पढ़ाया जाएगा, 1 दिन मैथ्स. नेक्स्ट वीक 2 दिन मैथ्स पढ़ाया जाएगा, 1 दिन साइंस. व्हाट यू विल डू रिमेनिंग 4 days of the each week? You will study on your own. Those who are in a 10th, those who are in a 9th, 8th, 7th, 6th, start doing self study. If you talk about Ambedkar or Swami Vivekananda or Ramanujan, they were busy with self study, not with coaching. We are just trying to help you out. So आप कोई पढ़ाने वाला है तो बहुत अच्छा पढ़ाएगा और मैं अब रामानुजन बन जाऊंगा, इस कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाइए. We will be talking lot on a self study and we'll be expecting lot from you on that front. So Jayashri, सर सेम टाइम पे ही 5th और 6th की क्लास होगी because I have siblings. Don't bother, those things will be sorted. See, you have approached us from because we intimated you that we are going to run something which will be useful to you. आपको useful होगा ऐसा कुछ आप कर रहे हैं. आप यहाँ इसलिए नहीं आए कि फ्री ऑफ कॉस्ट है. ओके, तो आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है, हमारा भी जेन्युइन इंटरेस्ट है.
शुरुआती दौर में महीना भर थोड़ी तकलीफ होगी, कभी आपने क्लास मिस कर दिया क्योंकि हमारे टाइमिंग चेंज हो गए, कभी टीचर अवेलेबल नहीं था, आप बैठे रहे और लास्ट मोमेंट पे 8 बजे बता दिया कि आज नहीं है टीचर, आज का क्लास कैंसिल। दिस कीप हैपनिंग। देन इन बिटवीन देयर विल बी मानसून। बट ये सारी चीजें 2 साल सहने के बाद आई एम वेरी कॉन्फिडेंट फाइनली सिलेबस अच्छे से कवर होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कवर होता है, घर बैठे कवर होता है। अभी इसमें ज्यादा मत एक्सपेक्ट करिए हम। ओके, नो then thank you sir. Sir, what is the time for class? पृथ्वी पाटिल, टाइम फॉर क्लासेस इज 5 बजे से रात के 9 बजे तक। अभी इसमें किसके लिए कौन सा टाइम स्लॉट है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे इंटीमेट किया जाएगा एंड वी विल बी बिट फ्लेक्सिबल। इफ मेनी पीपल कमेंट कि नहीं सर ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं, वी विल ट्राई टू एडजस्ट, बट सम टाइम यू हैव टू आल्सो एडजस्ट एंड एज सच वी विल बी कीपिंग रिकॉर्डिंग। तो आपको सब मिलते रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत। In fact, sir, in summer vacation, we are free, hence available for 5-6 hours in morning plus evening. Hence, sir, please start the morning also. Shreya is in 10th standard, my sister is in 5th standard. We understand this. But let me tell you very frankly. Now, यहाँ पे मैं कुछ बोल रहा हूँ negative. Those who have planned something for अपने बच्चों के IIT के लिए सोचा है, 9-10 is the period when your kids need to go through that particular learning also. तो 9-10 के बच्चों को फ्रीडम है कि आप पैरेलली कोई ऑफलाइन क्लास आपका लगा रहे हो जहाँ पे आपको अच्छा ग्रूमिंग मिल सके, यू आर मोस्ट वेलकम। ये जो ऑनलाइन क्लासेस हम चला रहे हैं ये स्पेशली उन मम्मी डैडी के लिए है जो बच्चे को ग्रूम करना चाहते हैं। तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट नर्सरी टू 7th-8th स्टैंडर्ड। बच्चे छोटे होते हैं, बाहर जाएंगे तो बहुत रिस्क होती है, तो ये चलेगा। 9-10 के लिए एक फंडामेंटल गाइडेंस मिलेगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, बट देन जो रिपीटेटिव आपका किया करवा के लेते या हाईफाई क्लासेस वाले वो इतना होगा नहीं। बट एक साल आप अगर आप एक्सपीरियंस लेने के लिए रेडी है तो ईश्वरी जी यू आर मोस्ट वेलकम। सो दोज हु आर इन द 10th don't expect much from us. This is very important here, not because it was previously board, not board now or turning point of no. 10th and 12th के मार्क्स जिंदगी भर पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स के लिए अच्छे गाइडेंस की और फिजिकली किसी के कांटेक्ट में रहने की जरूरत है। इफ स्कूल इज सेटिस्फाइंग इट टू द 80%, 20% will be given by us. If school is satisfying it to the 60-65%, 30-35% will come. Actually from our end it will come to the 60% because we are in online mode. आपका मूड खराब है, आप सुन नहीं रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं ना टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। तो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है और वो आपके सामने है और आपका मूड खराब है तो वो सामने से चिल्लाएगा तो आपका मूड वैसे ही ठीक हो जाता है। So that you try to understand. What is the time for classes? Around okay, around 8 हो गया इसका। बार बार वही सवाल पूछने से क्या होगा? पृथ्वी पाटिल, आवाज नहीं आ रही है तुमको? इफ यू रिपीट क्वेश्चन तो जवाब क्या अलग मिलेगा क्या आपको? अभी आप 8th स्टैंडर्ड में हो तो 8th का टाइमिंग क्या है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। एकदम गैस पे हो ऐसा मत करो। Harkirat is 5th standard, is my sister in 6th standard. Yes, that's fine. So what is time for class 8 classes? हाँ ठीक है, विल कन्वे यू, सोहानी शर्मा जी विल कन्वे। थैंक्स फॉर द रिप्लाई। ओके सर, ओके। सो एवरीबॉडी हैज ओके 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 एंड देखिए 8:57 हो गए, 3 मिनट्स बच गए। ग्रेट टीचर्स, पीपीटी देखिए, नेवर ट्राई टू बी बेस्ट टीचर्स, दे सिंपली ट्राई टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देयर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। तो बच्चे और माँ बाप जो मेरे उम्र के होंगे तो इन सबको हमारे मेरे पढ़ाई से मैंने जो जिंदगी में सीखा उसका कुछ ग्लिम्पस मैं देने की कोशिश करूंगा। मैं आपके बहुत कम कांटेक्ट में रहूंगा पर टीचर्स उतने ही अच्छे हैं। ये हमारा संपर्क आपके पास होगा ही, नहीं है तो लिख लीजिए। एंड देन आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आपके स्कूल में वगैरह कुछ लेक्चर्स करने हैं, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वो भी डिमांड हमारे पास रख सकते हो। मिनिमम एक्सपेक्टेशन टू एड्रेस एनी स्कूल इज at least 200-300 students in an online forum and time discipline and the behavior discipline. Okay, so thank you so much. Now I'll stop here, but before that I shared a jam file with the meeting. The jam board, this right. Okay, I shared jam file with the meeting, whatever it. Thank you so much. Good night everybody. You will get message before Monday about the classes starting from the Tuesday.
Thank you once again for your kind participation. Thank you. Thank you. Sir, can we have recorded meet? Yes, yes. ये रिकॉर्डेड मीटिंग आपको भेजी जाएगी. कुछ लोग लेट ज्वाइन किए, उनको एक रिक्वेस्ट है, अगली बार से आपको अलाउ नहीं किया जाएगा. तो प्लीज फॉलो टाइम डिसिप्लिन. ये सारे जो मैंने डिस्कशन किया, इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत मंगलम मिश्रा सर है उनकी है, जो बिहार से है और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और वैशाली पाटिल मैडम जो मेरी वाइफ है. तो हम तीनों ने मिलके इसमें एफर्ट्स डाले. मंगलम मिश्रा जी के एक कलीग भी है, राजीव गुप्ता जी. तो ये सब तीन चार लोगों ने इस पर्टिकुलर क्लास के लिए एफर्ट्स डाले. मैं उन सबसे सबको थैंक यू बोलूंगा, और आप सबको भी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू बोलूंगा. वी विल स्टॉप हियर. गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय. Good night, good night. Now all of you can leave class, please. Thank you so much. Bye bye.